नमस्कार, वेलकम टू ओपीएससी ओएस ए टू जेड। सो 2018 ओपीएससी ओएस प्रिलिमिनारी क्वेश्चन पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 17 जाए आम लास्ट वीडियो कवर कर सारी जो मैंने भी देखी ना प्लेलिस्ट को जाकि देखी नि। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 71। सो one criticism of Rostow's theory of economic growth is that much available data contradicts his thesis about the take-off stage. There is no explanation of why growth occurs after take-off. Option C, his hypothesis of stages of growth is difficult to test empirically. All of the above are correct. So option D is your correct answer. So Rostow argued that the economic takeoff must initially be led by a few individual economic sectors. So next question number 72, which of the following is ranked one among the cleanest cities of India in 2018 ranking by Ministry of Urban Development? Options are Bhopal, Indore, Mysore and Chandigarh. The correct answer is Indore. Indore is from Madhya Pradesh. 2022 रे cleanest city rank 1 आपनकर अछि Indore, the same, and Surat from Gujarat in second and Navi Mumbai in third. So next question number 73, which of the following in India is enlisted in the Montreux record? Options are Keoladeo National Park, Chilika Lake, Astamudi wetland and Hokera wetland. Our correct answer is Keoladeo National Park from Rajasthan is enlisted in Montreux record. There is another place which enlisted in the Montreux record, that is your Loktak Lake in Manipur. Montreux record mostly आपणकर वेटलैंड enlist करा जाए. The Montreux record under the convention is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance where changes in the ecological character have occurred and occurring or likely to be occur as a result of technological development, pollution and other human interference. So there are 75 Ramsar sites in the India in 2022. So next question number 74 को, which among the following is the most abundant greenhouse gas in the earth atmosphere? Options are carbon dioxide, water vapor, sulfur dioxide and tropospheric ozone. Your correct answer है option B, water vapor. There are 6 number of greenhouse gases. One is water vapor, then carbon dioxide, methane, nitrous oxide and ozone, sulfur hexafluoride, and water vapor is the most important and abundant greenhouse gas. So next question number 75 को, which one of the following is a useful biological indicator of sulfur dioxide pollution? Options are bryophytes, algal blooms, pseudomonas and lichens. So lichens are the indicator of sulfur dioxide pollution, and the efficient absorption of the system of lichens results in the rapid accumulation of the sulfur during the high level of sulfur dioxide pollution. And next bryophytes कहला में, bryophytes is called as the amphibians of the plant kingdom. They can live in land and for reproduction and fertilization they need water. So this is called amphibians of plant kingdom. So next pseudomonas. Pseudomonas is a common genus of bacteria which can cause infections in the body under certain circumstances. And algal bloom कहले, algal blooms is a result of nutrient like nitrogen or phosphorus from fertilizer runoff entering the aquatic system and causing excessive growth of algal, that is called algal bloom. तो मेरा मोस्टली आपनकर को पोल्यूटेंट्स पाई हुए नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, the use of microorganism metabolism to remove pollutants such as oil spills in the water bodies is known as biomagnification, bioremediation, biomethanation and bioreduction. तो our correct answer है bioremediation. Option B is your correct answer. Bioremediation is the use of living organism like microbes, bacteria in the removal of contaminants, pollutants and toxins from the soil, water and other environment. So next biomagnification को, biomagnification is the accumulation of particular substance in the body of organism at the different trophic level of the food chain. Do remember different trophic level of food chain रे बट particular substance रो accumulation को कहे biomagnification. The यार example गोटे जमते नबा accumulation of the insecticides like DDT in zooplankton, and zooplankton को आपनकर small fishes consume करती. So different trophic level रे आपनकर accumulation बढ़े गोटे पर्टिकुलर सब्सटेंस कहुए बायोमैग्निफिकेशन. बायोमिथेनेशन कहले इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिक मटेरियल इज
microbiologically converted under anaerobic condition to biogas. एटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपणकर बायोगैस को कन्वर्ट हुए थ्रू फर्मेंटेशन in absence of oxygen ताको कहा जाए बायोमिथेनेशन and bioreduction कहवा काको bioreduction is a general term for reducing the number of microorganisms or bioburdens in a product known as this is also known as killing of bugs bugs. So next is question number 77. India's fast biofuel powered flight run from the Dehradun to Delhi is options are SpiceJet, Jet Airways, Vistara, Indigo. यार करेक्ट आंसर है SpiceJet. तो इंडिया फास्ट बायोफ्यूएल पावर्ड फ्लाइट जोटा होची सेटा SpiceJet इनिशिएट करथिला फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 को व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर द माइग्रेटरी वाटर फाउल इन इंडिया. ऑप्शंस आर घाना सेंचुरी, राजस्थान, चिलिका लेक ओडिशा, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा, दाल लेक काश्मीर. तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चिलिका लेक ओडिशा. चिलिका लेक इज द एशिया's largest lagoon and it spreads through 3 districts that is पुरी, खुर्दा एंड गंजाम. पुरी, खुर्दा और गंजाम देखिए आपन चिलिका लेक फ्लो करछि. एटा ईस्ट कोस्ट इंडिया ईस्ट कोस्ट पार्ट अच्छी एंड दया नदी माउथ देखी बे ऑफ बेंगल को एटा फ्लो करछि. इन 1981 चिलिका डेजिग्नेटेड द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड टू of international importance under the Ramsar Convention. सो नलवन आइलैंड आपणकर जोड़ा गोटे बैड सेंचुरी चिलिकार अच्छी. घाना सेंचुरी को देखा जहाँ आम कहे कियोलाटा नेशनल पार्क फॉर्मली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी. एटा राजस्थान अच्छी आम देखी इट इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट. नेक्स्ट सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आपंकर हरियाणा अच्छी. दाल लेक आपंकर श्रीनगर अच्छी जोटा कि समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड काश्मीर कहला आगुरी एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ फ्लावर्स. दाल लेक को आपंकर लेक ऑफ फ्लावर्स कहुए मन रखते. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. ग्लोबल हेक्टर, गैलन पर कैपिटा, क्यूबिक मीटर, मैन आवर. तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए ग्लोबल हेक्टर. इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है कि बायो कैपेसिटी है दे आर एक्सप्रेस्ड इन ग्लोबल हेक्टर्स. दिस इज कंपेयर्ड इन ग्लोबली एंड स्टैंडर्डाइज हेक्टर्स विथ वर्ल्ड एवरेज प्रोडक्टिविटी. सो नेक्स्ट the ecological footprint is a resource accounting tool that measures how much biologically productive land and the sea is used by a given population or activity and compares this to how much land and the sea is available. केते आपनकर सी और लैंड एरिया अवेलेबल अच्छी और केते ह्यूमन पॉपुलेशन जरा यूज होची ता एटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट थ्रू टू मेजर करा जाए एंड तार यूनिट हूँ ग्लोबल हेक्टर. तो ग्लोबल हेक्टर आपंकर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आउ बायो कैपेसिटर यूनिट मन रखु. सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80. अनुराधा सावनी is well known for her work in which of the following fields. Options are microfinance, animal rights, environment protection, D rain water harvesting. यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एनिमल राइट्स पर से काम करते. अनुराधा सावनी वाज द हेड ऑफ इंडियन ऑपरेशंस ऑफ पेटा. पेटार फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. सो थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन आम नेक्स्ट वीडियो कवर करवा.